डीएनए कॉपी वो आपने बोला बाद में करेंगे। ओके, तो इस सेक्शन पूरा हो गया था और डीएनए कॉपी स्टार्ट करना है ना। वेट फॉर 3 मिनट्स। उसके स्टेटस ही कृष्णा कृष्णा है फोटोज वगैरह बड़ी बात है। आपको क्वालिटी मैं कुछ नहीं पढ़ती जाता, मेरी मम्मी पीछे बैठती है। सुना जो हमने लिखा है भगवान क्या करते हो हाँ वो भूख लगी तो खा लेते नहीं रखा नहीं रखा। Here we go on to the next part, that is what do you mean by DNA copy? Okay, what is reproduction? What is DNA copy? Okay. Now, when I say reproduction, what do you mean by reproduction? Generally, what we say? Giving birth to or giving birth to young ones is known as reproduction. So, if I take a single cell, we are not saying organism, it's saying a single cell. So, this single cell, it needs to multiply. So, it forms two daughter cells. We are not talking about the mode. Sexual के जन्म में आया. They are multiplying. Okay. So, what exactly is multiplying in that cell? The nucleus, or what we say as genetic material. Now, then I have a genetic material. So, in case of a cell, the genetic material present in the nucleus is DNA. Now, very specifically, I have a single pen in my hand, marker एक हाथ में है, and this marker I need to give her. At the same time, I need to give him also. मुझे marker दोनों को देना, आपको भी और आपको भी. Is it possible? So what? I need to bring another one. Then only I can distribute it. Exactly same thing. The parent has its own DNA. Okay. Now it has to forward it to its daughter cells. Daughter cells बन रहा है. So it has to have. उसके पास एक ही है. How much he has to pass? 2. So in this process, we say there is DNA copying, or proper word is DNA replication. The DNA either gets copied, or what we say the DNA replicates. Now, it's not just mere the cell, the DNA copy हो गया and the cell survives. ऐसा भी नहीं. A very simple way to again put across is
मम्मी डैडी ने नया कार लाके दिया या बाइक लाके दिया, सिर्फ कार या बाइक से मतलब नहीं ना, नहीं चाहिए ना चलाने के लिए. एग्जैक्टली सेम over here. Apart from DNA, within the cell there is cellular apparatus. ये दोनों साथ में है तो सेल सर्वाइव कर रहे हैं. So what happens is एक डीएनए कॉपी होगा तो दो, so one DNA copy takes place. Second, there is also formation of cellular apparatus. So नया cellular apparatus बन रहा है और DNA copy हो रहा है. Now what exactly is cellular apparatus? उसमें से कुछ दिया नहीं cellular apparatus का क्या होगा? ठीक है, cellular apparatus का मतलब होता है the materials required. So for a cell to survive apart from nucleus, so apart from DNA, it also requires other cell organelles, other enzymes, many other things. So all that put together is what we say as cellular apparatus. So this also be present in the newly formed cell. Itna samajh mein aaya? Am I clear? No. So now we need to first understand DNA copying or DNA replication. For this, we go slightly out of the context. Is in the nucleus, what is the thread-like structure on this? हम nucleus draw करते हैं ना ऐसे, and we draw it like this. आया ना? Online children. So what is that thread-like structures? No, it is not chromosomes. अगर इसका आंसर आया तो पास होने के लायक हो. सोचो क्रोमोसोम्स के अलावा क्या होता है? जीन्स. उसके अलावा न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई भी वर्ड याद आ रहा है वो बता दो ना. In the thread-like structures are known as chromatin fibers. ये thread है. This thread, if I pull it out, then and the cell is about to divide. जब cell divide हो रहा है, this chromatin fibers, threads condenses. यहाँ पे the thread condenses to form chromosomes. Chromosomes is a condensed form of chromatin fiber. इसका स्ट्रक्चर ये होता है, शायद देखा होगा. अब अगर मैं इसको मैग्नीफाई करूं तो इट इज समथिंग लाइक दिस. The thread is condensing to form a structure known as chromosomes. How many chromosomes do we have? 23 pairs. 46 or 23 pairs. So कितने threads होंगे? 46 या 23 pairs. Now, then ultimately अगर ये decondense हुआ तो क्या बनेगा वापस? Chromatin fiber. So now start pulling it out. इसको मैं खींचता हूँ. मतलब first it is much closer. मैं इसको और pull करूँ. टेलीफोन की वायर देखा होगा ना? वैसे. So खींचते जा रहा हूँ. So when I pull it out, what I find is this thread-like structures are bound by at certain points. जहाँ पे वो turn कर रहा है, there are certain structures, ball-like structures, which supports this. That is known as histones, and the thread is known as DNA. So if I say what is chromatin fibers chemically made up of? Histones plus protein. Histones and DNA.
Histones are nothing but proteins. Not required detail for this. 8 molecules of histones form a ball. जिसके सराउंड में जाता है 1.5 टन ऑफ DNA. और फिर पूरे बॉल्स यहाँ पे होंगे और थ्रेड होगा. सो अगर मैं DNA को देखता हूँ, क्रोमैटिन फाइबर को देखता हूँ, और सिंपल लैंग्वेज में मुझे किसी को बोलना है, मैं उसको क्या बोलूंगा? क्रोमैटिन फाइबर मोतियों की माला है. Beaded chain. What does the moti represents? What does the chain represent? Yeah. कितना समझ में आया? Okay. Now, what is the function of chromatin? It contains gene. ये उसका function नहीं. Function क्या है? Source. Yeah. Means what? It shows genetic data मतलब क्या? It carries genetic information. तुम काले पीले नीले गोरे टिंगू बिंगू जो भी बोलोगे उसका डेटा कहाँ पे है? इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? डीएनए. इतना समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट क्वेश्चन. आर वी सेम? Are we same? No. So is our chromatin fiber same? No. So what is that chromatin fiber made up of? DNA and histone. So will they be same? But it was found histone सिर्फ supporting molecules. तो हम सब में same है. So is that one which carries genetic information? No. No. ये हम सब में same. So what is actually the genetic information? DS. Okay, so we have the genetic information which is DNA. Now, children, I know slightly out of syllabus, but still required. What is DNA made of? Anybody? चलो मैं आपको ये कर लाइफ प्रोसेस पढ़ा था. Okay, feed food. What are 3 main nutrients which feed? What is carbohydrate ultimately broken down? Glucose. Proteins, amino acids, lipids, plus glycerol. So can I say chain of glucose is carbohydrate? Yes. A chain of amino acid is protein. A chain of fatty acid plus glycerol is lipids. Same way, DNA is a repetitive chain of nucleotides. Each DNA is a repetitive chain of nucleotide. अब मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एक्चुअली ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं है. न्यूक्लियोटाइड को अपन N पकड़ते हैं, it is something like this. It will be a huge chain of nucleotides. Now, this nucleotides, will it differ in you and me? Yes. Yes. But surprisingly, children, what was found was nucleotide भी further 3 चीजों से बना. It is formed of a pentose sugar. एक दूसरा phosphate और तीसरा the nitrogenous base. 3 चीजों से बना. अब will the pentose sugar be same in us? The phosphate? Yes. Why? Element. Good. Nitrogenous base? Perfectly said. Phosphate का element ऐसा तो same ही होगा. Okay? ये same है. Pentose sugar भी same. Sugar है, वो भी same ही. So what should be my genetic information? Base. Made up of 4 types. I know slightly, but still. सिर्फ 4 ही होते हैं और सब में ये 4 ही होते हैं. But are we same? No. No. The reason is
this 4 base arrangement differs in all of us. What do you mean by this is A to Z alphabet है, alphabets कितने? और इसको arrange करके मैं अलग-अलग word बनाता हूँ. So if I take an example is, लो अपन इसका देते हैं अनुज का. Okay, so अनुज का अगर मैं DNA निकालता हूँ, so pentose गया, phosphate गया, जो common है उसको लिखते ही. So ultimately I represent Anuj DNA in the form of A T C C C G G A T C C A T G C C G A G A T C. ये अनुज का होगा. Okay, then हर एक को एक बेस पेयर बोला. हमारे केस में just approx आइडिया लेने के. एक डीएनए में 4.6 into 10 raised to 9 million ऐसे होंगे. It's a huge number. अब अगर मैं अनुज का कंपेयर करता हूँ उसके भाई से यश. Okay, so you find A T C C C G G A T A T G C T A G A T C. Is it differing? Yes. कहाँ पे? इस जगह. That's an example. What does it means is जितना चेंज कम होगा उतना क्लोज रिलेशन होगा. जितना चेंज ज्यादा होगा उतना they are off related or they are from different groups. तो बोला ये जाता है कि इंसानों का डीएनए is differing between among us by less than 1, in fact less than 0.1. 0.1% भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. If I compare my DNA or your DNA with a chimpanzee or monkey, तभी वो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होगा, पर 1% के भी ज्यादा. रीजन एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, प्राइमेट्स. अगर मैं डोंकी, काउ, बफेलो इससे भी करूंगा तभी भी ग्रुप में ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, क्योंकि अभी भी एक ही ग्रुप को बिलोंग करते हैं, मैमल्स. तो जितना आप क्लोज में जाओगे उतना देयर वुड बी नो चेंज. हाँ, इंसान और पटेटो का चेक करोगे तो डिफरेंस होगा, पर सीक्वेंस यही रहेगी. इज इट क्लियर? इतना समझ में आया? Why I've gone to this part? Because फिर DNA copies. Sir, so twins में Almost same, but some minor changes, which makes it identical. Identical twins में is the DNA finger, is their fingerprint same, is the iris scan same. एक शक्ल सूरत सिप से, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों बच्चे एकदम बच्चे, वेरी रेयर. सो देयर आर बाउंड टू वर्क. सिर्फ सेम कब होगा? जब वो क्लोन किया था. तो निकाला. So I go ahead. yes. Okay. Now, every organism will be written in this sequence. आया ना? Yes. छोटा सा एक्सरसाइज करना नहीं, सोचना है. मान लो ये अल्फाबेट जो मैंने लिखा है, I start writing from the corner of the board. Okay, एक पूरा लाइन कंप्लीट कर दिया यहाँ तक, and 100 अल्फाबेट्स आ गए. So 100 ऐसे 100 लाइन्स बढ़ गए. 100 like this, 100 lines like this. And say a simple word, copy. Copy as it is. होगा? होगा? नहीं होगा. Unless I give you a printout और आप स्केल से मूव करते करते तब कट करते करते कॉपी करोगे तो, वरना इधर का लाइन इधर सेम ही दिख रहा है, अरे इधर का क्या उधर का, आपको सब कुछ रखना पड़ेगा मूव करने के लिए. क्योंकि लाइन कौन सा है, अल्फाबेट कौन सा. Then same thing occurs over. So when the DNA copying takes place, there are bound to occur some changes. अब इसको 3 ways में देखना. First way to DNA copy is mind knowing as it is copied. It's like क्या घर पे मतलब मम्मी डैडी और ये और भाई बहन शायद है,
सबके पास आपके घर की कीज होती है नॉर्मली, बिकॉज आजकल एवरीबडी इज वर्किंग, सो एवरीबडी हैज अ हाउस कीज। ओके, सो नया घर लिया डैड ने एंड एक ही की है, तो 3 डुप्लीकेट कीज बना हर एक मेंबर। अब की बनाने के पास गए, की बनाने की बनाया, पहला आराम से बनाना था एकदम परफेक्ट, जो की है उसके साथ परफेक्ट मैच। दूसरा की थोड़ा 19-20 का फर्क। तीसरा कोई ऑलरेडी 2-3 कस्टमर खड़े हैं, कस्टमर आए नहीं, जल्दी जल्दी में करके दे दिया कैसे तो डैडी कीज लेके आ गए, घर पे डोर्स को चेक किया, फर्स्ट की ओपन्स, सेकेंड स्ट्रगल करेंगे पर ओपन होगा, विल टेक सम टाइम पर होगा। थर्ड में द सेम मैकेनिज्म गोज फॉर डीएनए को, एग्जैक्ट कॉपी हुआ, सो दिस एग्जैक्ट कॉपी which is formed with the newly similar apparatus, इनके साथ मैच करना है, दोनों मैच किया, सेल सर्वाइव्स, कंटिन्यू। थोड़ा चेंज हो गया, माइनर चेंजेस, इट स्टिल सेलुलर apparatus will match, एडजस्ट कर लेगा and the cell still survives. Drastic changes occurring, it will not be able to match with the newly formed cellular apparatus. The cell would, simple language में survival of the fittest. इस तरह से हम बोलते हैं। Then this is what errors in DNA cause. There is always bound to occur some errors. Okay, the copying is not 100% perfect. चल बॉडी में मैकेनिज्म है, उसको रेक्टिफिकेशन करने से लेके उसको प्रूफ फीड करने तक, जैसे अपन नोट्स बनाते प्रूफ फीड करते हैं, एग्जैक्टली बॉडी में भी ये सब कुछ होता है। ये होने के बावजूद भी सम एरर में occur, which leads to a variation. So what happened? Minor change हुआ, इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ा, but it would lead to variation. Now what is this variation basically? And DNA ये आपको लेवल में पढ़ोगे, सेंट्रल डॉगमा ऑफ बायोलॉजी, मतलब सेंट्रल आइडिया ऑफ बायोलॉजी इज डीएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन के, ये कोडेड लैंग्वेज में होता है, इसको डीकोड करता है आरएनए। आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आके इसको प्रोसेस करता है टू फॉर्म प्रोटीन्स। ओके, तो अगर डीएनए मान लो एक सीक्वेंस है, इट प्रोड्यूसेस आरएनए व्हिच प्रोड्यूसेस प्रोटीन 1, अब उसमें माइनर चेंज हुआ, सो व्हाट विल हैपन, अगेन आरएनए थोड़ा डिफरेंट होगा, व्हिच विल क्रिएट अनदर प्रोटीन व्हिच इज 2, वो थोड़ा प्रोटीन चेंज हो गया, दैट लीड्स टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज व्हाट वी से एज, okay, but variations are the one which leads to evolution. धीरे धीरे variation keeps on accumulating and a longer version we see that as evolution. Simple way again to understand this is, एक रात को बंदर नीचे आया, पेड़ के नीचे सोया, सुबह उठा इंसान बना। Is it like this? No, I don't think so. Okay, was it a one-day process? 1 month process? No. It took millions of years, because every time there was small changes. What about accumulating changes lead to evolution from monkey to human. So that is what it means. Good changes बहुत ज्यादा abnormal होने के वजह से they would stop there itself. Species would die. Am I clear? So this is what all about your DNA copying and leading to variations. Variations are very much essential because as the organism which stays in that environment, is the environment constant? No, environment keeps on changing. So environment change हुआ, so DNA also needs to change according to it. Okay, a very simple example, अपने घर पे देखना, मम्मी डैडी चिल्लाते रहते हैं,
कि बड़े प्यार से बोलते और वो डायलॉग भी मारते हमारे टाइम पे ऐसा 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 ना बोलते कि नहीं बोलते सर उनका जमाना अलग उनके टाइम पे 10 रुपीज पॉकेट मनी वाज अ बिग डील आज की डेट में 10 रुपीज दे दिया तुम्हें हाथ में इतना मतलब रिस्पेक्ट है वो वरना कीप द चेंज Helen, the difference is as the time progresses DNA also needs to change with the environment अगर चेंज हुआ तो सर्वाइव करेगा नहीं हुआ तो एलिमिनेट एक्सटिंक्ट am I clear Yes. everybody Yes. okay open your volumes share karna okay तो starting the part but I wanted to read loudly form DNA copying in equation यहाँ से लेके यहाँ तक जल्दी जल्दी पढ़ना टाइम वेस्ट मत करना It's a given in reproduction with the creation of a DNA copy. DNA carries the information for inheritance of features from parents to next generation. DNA contains information for making proteins. If the information is changed, different proteins will be produced, which will lead to altered body designs. Procedure. With the help of chemical reactions, the cell builds copies of their DNA. This creates 2 copies of the DNA in a reproducing cell and they need to be separated. One copy will be placed in DNA cell original and other copies should have cellular apparatus to maintain the life processes. DNA copying involves additional cellular apparatus and then the DNA copies separate each one having their own cellular apparatus. okay DNA copying and function of cellular apparatus ये साथ में तब सेल सर्वाइव करेगी Conclusion. Each cell divides to give rise to 2 cells. DNA copies will be similar but not identical to the original one. The 2 cells produced will not be identical to the original. Biochemical reaction will show some variations each time by copying. Sometimes the variations are so different that the DNA copy will stop working because the cellular apparatus present in it does not match. Such variation leads to the death of the organism. The importance of DNA copying for the maintenance of body features that allow the organism to use the niche where it lives in. yeah niche means a home the ecological habitat where the organism is found okay so every organism has its own particular house जब बोला जाता है fish is aquatic okay so उसके aquatic में what is the parameters required for it that would decide the in terms of its variations DNA contains information for inheritance from parents to offspring. It gives rise to new cells. okay any doubts up till here okay then next part variation part Population is a group of organisms of same species at specific area at different time. No 2 individuals are alike. There is a difference between individuals. Structural and psychological difference between individuals is called variation. okay structural and psychological then structural physiological and psychological तीनों का variation is what means the difference is what I mean by variation like structurally simple example है I might be slightly short-headed he might be slightly more headed तो ये structural हुआ physiological में भी क्या मेरे physiological में in terms of maybe my body is capable of producing more amount of insulin or less ये physiological हुआ compared to him and psychological would be development of the brain and other features so that would be हम सब में same तो नहीं होगा अलग-अलग है हम individuals that is what I mean by variations Variations in population are caused by environmental or geographical conditions. Example, temperature on Earth can go up and down, water levels can vary, meteorites, etc. Variations lead to mutation or sudden change in gene structure, which may result in the formation of new species. Variations are raw material of evolution. Variation is thus useful for the survival of species over time. yeah then underline variations are raw material for evolution then raw materials for evolution they have not said variation leads to evolution जरूरी नहीं variation हुआ इसका ये मतलब नहीं कुछ नया बनेगा ही
It can lead, it is a raw material which can lead to erosion, but not a compulsion as such. Okay. Next. Example, if there were a population of bacteria living in temperate waters and if the water temperature were to be increased by global warming, most of these bacteria would die, but the few variants resistant to heat would survive and grow further. Why is variation? Yeah, sure. So then, अब बैक्टीरिया का एग्जांपल दिया है जो बुक में दिया हो. I give you a different example. घर पे मस्कीटोस के लिए क्या यूज करते? रेपेलेंट यूज करते हैं. कि ऑल आउट और वो सब मॉर्टिन वगैरह यूज करते होंगे. ठीक. अब चलो अपन एक मॉर्टिन या अपन लगाया यहाँ पे. ठीक. पहले 2-3 दिन एकदम इफेक्टिव है, दिखाई दे रहा है, सब लोग मर रहे हैं. आफ्टर 5, 10, 15 डेज के बाद दिखाई देता है यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है. इनफैक्ट वो मच्छरों से रेपेलेंट के आप मुंह पे जाके बैठा हो और कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है. हाँ या ना? Why like this? न्यूट्रिशन वो लास्ट पड़ा है. No. Then they are habitual to the chemical. Okay, they are adapted. अब मान लो 500 मस्किटोस थे, उसमें से जो सबसे वीक होंगे इम्यूनिटी में वो पहले दिन ही टपक जाएंगे, है ना. कुछ दूसरे दिन, कुछ तीसरे दिन, तो कुछ तो नमूने होंगे, है ना, जो स्ट्रगल करते होंगे सरवाइव करने के. And in that struggle, what will happen? Will also bring about reproduction. So what will happen? The new species or the new generation of species, the new generation which they will give, they would have that change in that part, which would be adapted to that chemical. तो उसके next generation या उसके next generation में थोड़ा बहुत ज़्यादा adaptability है, तो उसके बाद उसको कोई फर्क नहीं. Okay, so that variation is required for it to adapt. Okay, and that is what leads to, we say, variations or change in the genes, because हम वो used to हो चुके हैं. Actually, that is the only reason कि डॉक्टर अपने को जब भी कोई लेता है बीमार गिरता है तब वो बोलता है चाहिए एंटीबायोटिक 4 दिन या 5 दिन लेना, बड़ी बोलता है पूरा साल भर ले ले. बिकॉज अगर आपने उस कोर्स को ज्यादा एक्सटेंड कर लिया, व्हाट विल हैपन? यू विल बी यूज्ड टू दैट मेडिसिन. ओके, और जब वापस बीमार गिरोगे वो मेडिसिन का आपके बॉडी पे कोई असर नहीं. सो एग्जैक्टली सेम. सो दैट इज व्हाई इट इज सेड, अगर आपको कोई यूज करना है तो यूज करो, स्टॉप करो, कोई और यूज करो, स्टॉप करो, और यूज करो, स्टॉप करो. कीप ऑन चेंजिंग so that they are not getting acclimatized to that change. Am I clear? Okay, so that is all about your variations. कुछ भी chemical change करने से मतलब. Okay, then only you will be able to get. Simple है ना. अगर आप मान लो जो क्रिकेट में दिखाते हैं, क्या अगर अपन टेस्ट मैच करने जाते हैं तो अपन 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पहले जाते हैं to get used to that environment. Okay, पहले अपन सब 10, 15, 50 रन में ऑल आउट हो जाते हैं. Okay, उसके बाद थोड़ा एक्लेमेटाइज होने के बाद थोड़ा अच्छे से कर लेते हैं. Okay, अब वहां पे एक्लेमेटाइज हो गए, फिर इंडिया में आए, फिर 2 साल के बाद वापस जाओगे तो क्या वापस टेस्ट मैच के दिन जाते हो? नहीं ना, फिर वापस 10 दिन पहले जाना, बिकॉज आप यूज्ड टू 2 साल पहले हुए थे, अभी थोड़ी है. सो चेंज इज रिक्वायर्ड. सो अगर आप प्रोसेस क्या चेंज कर रहे हैं ये माइंड. ठीक है. Next, there is a question given over there. Okay, read that question. Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? Okay, son, why is variation necessary for the species but not for the individual? Example हम वही लेते हैं मस्कीटो का. मस्कीटोज मरते गए, इंडिविजुअल मान लो अपन सब मस्कीटोज है. एक मोमेंट के लिए हमारा साइड वीक साइड था, टप 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 दे, यू आर स्टिल बेटर थोड़ा बहुत. So you continue this generation. So what is happening? Individual मरते जा रहे हैं, but the species continue to evolve in a better way. So that is why variations are useful to the species, but individuals may not be benefited. Clear with this? That completes your DNA copying etc. बाद में अपन रिसर्च पूरा कर दिया था. What's the time? Next one over. Come to the sexual reproduction. हेडिंग लिखा है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने किया था ये
फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली इंट्रो. इसमें कुछ भी पढ़ने जैसा ऐसा बड़ा कुछ नहीं है. ओके, थोड़ा बहुत हमें पढ़ना है, वो लास्ट पार्ट में देखना है व्हाट एग्जैक्टली इट मींस. सबसे पहले आई वुड जस्ट रीड आउट दैट पार्ट, बट उसके पहले एक क्वेश्चन. एक बुक में ना देखोगे तो बेटर होगा. When I say sexual reproduction, we are talking about two parents. अब what are we? Uni या bisexual? हम यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल है? श्योर. बट हो भी सकते हैं कोई भी बात. हम क्या है? हम अपने आप के बारे में पता होगा शायद, है ना? सो व्हाट आर वी, यूनि और बाय? कंफर्म? ओके, कभी कभी कोई बाय भी बोल देता है. Okay, then we are unisexual. Now what is unisexual? Those organisms which have either male or female reproductive system. तो उनको बोलते हैं यूनि. Bisexual also known as hermaphrodite. Word लिखा हुआ है, इधर बोल्ड में लिखा है hermaphrodite. बड़ा hermaphrodite, those organisms which have both male and female reproductive system in the same organ. Like हिबिस्कस के फ्लावर में दोनों होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट. ओके, अर्थवर्म में भी दोनों होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट. ओके, सो अर्थवर्म, कॉकरोच, दैट इज अ पार्ट. तो फ्लावर के अंदर दोनों पार्ट है. देन आई से इट इज अ बाइसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट. हमारे केस में नॉर्मली बाइसेक्सुअल बात करें. ओके, वी हैव ट्रांसजेंडर जिनमें कोई एक ऑर्गन होता है बट नॉट डेवलप्ड, सो वो कैटेगरी में आते हैं बाइसेक्सुअल्स के. ओके, सो मतलब अगर वो पैदाइशी लड़का है पर हरकतें लड़कियों की तरह है, सो वो बाइसेक्सुअल कैटेगरी में नहीं है. उसको बाइसेक्सुअल बोलते हैं, but it is not having both the organs. It is having only one, but not properly formed. Am I clear to everybody? Okay, so that is what bisexual are. First part, I'll just read out that part, jaldi se, because really not required to finish. The sexual reproduction is a type of reproduction in which the young ones or offspring are formed by production of fusion of gametes or sex cells. It is generally involves two parents, male and female. In animals, male and females are produced in different organisms. Such organisms are called as unisexual. In many animals, but there are some animals which are also bisexual. Okay. In some single individual, both male and female sex organs, such organisms are called bisexual or hermaphrodite. Tapeworm, earthworm, starfish, hibiscus, बहुत सारे. Then, gamete formation and fertilization is necessary for sexual reproduction. For the specialized organs called gonads are present. So, gamete बनना जरूरी है, और gamete बनने के लिए there are specialized organs, and these organs are referred as gonads. Gonads is a word used for both male and female reproductive system. दोनों को मैं बोलता हूं तो मैं गोनाड्स बोलता हूं. इंडिविजुअली बोलूंगा तो एनिमल्स में व्हाट इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? शुक्र. तो मैं आगे बोलने वाला था. हाँ, तुम्हारे पे क्वेश्चन है ना. फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरीज. तो वहां पे चिल्ड्रन वही लिखा हुआ है. Then male gonad testis, female gonad is ovaries. Male sex organs or gametes are called sperms, and female sex organs are called as ova. The union of two of them forms a zygote, and it is known as fertilization. तो second point उसके बाद का zygote लिखा हुआ है. I'm not reading the exact lines. अच्छा ना, उसके बाद का देखना. For development of zygote, energy is required, but as the body cells become more complex, the germ cells also specialize. Now, what do you mean by this? Is अगर आप lower group पढ़ोगे, जैसे कि चैनल में तो शायद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था नहीं. ओके, पर अगर लोअर ग्रुप देखते हो, पॉरीफेरा, कोलेंटेटा वगैरह, इनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होते हैं, गेम्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, सेम शेप के होते हैं, जस्ट फ्यूजन होता है, डन, दैट्स इट. पर जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ते जा रही है फ्रॉम एनालिडा ऑनवर्ड्स एंड ऑल दिस थिंग्स, यू विल फाइंड द सेक्स सेल्स हैव बिकम स्पेशलाइज्ड. व्हाट इज द स्पेशलाइजेशन ओवर देयर? यू विल फाइंड वन ऑफ द सेल, मतलब पहले ऐसे होते हैं, just two cells, simple, singular, round. But as complexity increases, one of them becomes very small and highly motile, whereas the another remains large and non-motile. Okay, you can say
बड़ा है मोटा है तो भाग नहीं सकता, छोटा है पतला है तो जल्दी मूव कर सकता। तो ये मोटाइल बन गया और ये नॉन मोटाइल बन गया। बाय डिफॉल्ट जो मोटाइल था वो मिल्स बन गया, दैट इज स्पर्म, और जो नॉन मोटाइल था वो बन गया द एग, द ओवम। ओके, सो one germ cell is large and contains the food stored, while the other is smaller and likely to be motile. Conventionally, the motile germ cell is called the male gametes, and the germ cell containing the stored food is called the female gamete. Abjulan, ये भी differ करेगा. Okay. Now, what is the female gamete size? Small or large? Large. Why it is large? Non-motile and slim. Large क्यों है? Because it has food, it has reservoir of food, उसके अंदर food रखा हुआ है, so it is large. Okay, but need not be for every organism. जिनके अंदर internal fertilization, mammals, okay, वहां से food कहाँ से आता? The mummy provides the food to the growing fetus. तो वहां पे egg में food होना उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला. हमारे केस में the ovum is very tiny compared to जिनमें external fertilization, chicken egg, ostrich egg छोटा होता है या बड़ा होता है? बिकॉज उनके अंदर फूड रिजर्व बहुत ज्यादा होता है. उनका एम्ब्रियो सेल तो इतना ही है, ओवम का सेल इतना ही है, बट बाकी सब कुछ फूड रिजर्व है. हमारे केस में जरूरत नहीं थी, सो स्मॉल. इज इट क्लियर? Single cell zygote contains all the chromosomes originally present in two gametes. Repeated mitosis of the zygote forms a multicellular embryo, which gradually develops into a full-grown animal. Underline the word mitosis. Okay. उसके बाद significance of sexual reproduction है. Progeny shows genetic variation as there is a recombination of characters from two parents in the form of gametes. So male gamete का sperm ovum combine होता है. So कुछ characters मम्मी के, कुछ characters डैडी के recombine होके बच्चा बनता है. Are we xeroscopy of our parent? No. The first thing, every house there is a world war going on. किस पे गया है? बच्चा जैसे पैदा होता है मम्मी डैडी मेरे पे गया, मेरे पे गया, और ये वॉर मरते दम तक चलते रहे. जैसा बच्चा बड़ा होता है फिर भी झगड़ते. अच्छा किया तो मम्मी बोलेगी मेरे पे गए, बुरा किया तो मम्मी बोलेगी आप पे गए. वो क्रॉस करते रहेंगे. दैट्स द कंपैरिजन व्हिच गोज ऑन. बट हम ये देखते हैं कि वी आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स. आर वी जेरोक्स? नो. लाइक ही माइट बी हैविंग हाइट लाइक हिज पेरेंट फादर, मे बी फेस लाइक मदर, बट कुछ नए कैरेक्टर्स भी आएंगे इसके खुद के, दैट बिकॉज वो रिकॉम्बिनेशन. सेकंड पॉइंट, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इवोल्यूशन एज इट लीड्स टू वेरिएशन अराइजिंग बिकॉज ऑफ रिकॉम्बिनेशन. रिकॉम्बिनेशन होते गया तो धीरे धीरे वेरिएशन होगा. अ वेरी सिंपल एग्जांपल, मान लो कल अपना अनुज बाहर गया और किसी निग्रो से शादी कर ली. ओके, अब उसके 10 जनरेशन के बाद का बच्चा और इसके अभी फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, इट विल बी क्वाइट डिफरेंट. इंसानी होगा पर इट वुड बी क्वाइट डिफरेंट बिकॉज धीरे धीरे वेरिएशंस होते रहेंगे. नेक्स्ट, necessity for sexual mode of reproduction. Now children, why there is a need for sexual mode of reproduction, and in that they are given in next page. देखो, drawbacks and remedy. Now what is the drawbacks and remedy? The simple है, sexual reproduction इसके लिए चाहिए ताकि वेरिएशन बने, that is most important reason. But when I say sexual reproduction, I simply go with the definition: fusion of the sperm with the ovum to form zygote. अगर ये इतना सिंपल होता कि sperm है, ovum है, फ्यूज हो गया, zygote बन गया, then what would happen is the genetic material of sperm would be 46, the genetic material of ovum would be 46. zygote कितना हुआ? How much? मैथ्स नहीं आता क्या? 92. सर को बोलो.
92। अब ये बच्चा बनेगा, कभी ना कभी वो भी माँ बाप बनेगा, तो ये किसी और के साथ कंबाइन करेगा तो कितना होगा 184। अगर इसी प्रोबेबिलिटी को अपन इंडियन पॉपुलेशन को अप्लाई, forget about the world population, अपना इंडिया, हम दो हमारे सो, सो अगर उसको मैं लॉजिकली लगा दूं तो you would come to a stage where every generation the doubling of DNA takes place, 92 184 3 जो भी होगा वो, but टाइम आएगा क्या सेल में सिर्फ डीएनए 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 ही रहेगा, no place for any other cellular apparatus. Can the cell survive? No. The species would be extinct by then. Okay. Children, this mechanism, simply fusion of cells would not make a part. So what was required? ये जो sex cells है, they first need to undergo a special division. That is the remedy. So what is the remedy? Problem समझ में आ गया क्या? अगर डायरेक्ट कंबाइन हुए तो डबलिंग होगा, तो मुझे रेमेडी क्या थी? This cells first need to undergo meiosis. So in the testis, आपके पूरे बॉडी में माइटोसिस होता है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में meiosis होता है. The cells which are 46 undergoes half the number. इनको बोलते हैं meiosis. अब स्पर्म्स का क्रोमोसोम नंबर कितना है? 23. ओवम कितना होगा? 23. So 23 plus 23, it restores the original chromosome number. So meiosis is a special lineage, a special type of cell where the chromosome number reduces to half. 50 का कितना होगा? 40 का, 46 का, so that is what it means. सिर्फ reproductive gonads में ही ये हो सकता है. Then पूरे बॉडी में माइटोसिस, क्रोमोसोम नंबर रिमेन्स सेम. अगर मैंने यहाँ पे कट किया, नए सेल्स आएंगे, नए सेल्स का क्रोमोसोम नंबर क्या होगा? सेम होगा क्या हाफ होगा? सेम होगा. यहाँ पे मुझे हाफ की जरूरत नहीं है, पर स्पर्म और ओवम में मुझे हाफ चाहिए. And that is why they go under special division. Yeah. Next lecture 5 मिनट और लगेंगे meiosis के बारे में थोड़ा पढ़ने के लिए, and then we start with the sexual reproduction in flowering plants. Okay. I think next lecture का time table देख लेना. अभी तो फिलहाल वही टाइम दिखा रहा है, but I might change because I have no break.